Good morning, all of you. This is Sai Kiran sir from SK Chemistry Academy. Today we will discuss the dehydration of alcohol. That is very important for the JEE Mains and JEE Advanced and the NEET and even in the CBSE board and HSC board. See, in the NEET, at least two questions will come from the dehydration of alcohol. In the JEE Mains, at least one question, and JEE Advanced also one question. Even it is a HSC board and CBSE board, they will ask the mechanism of the dehydration of alcohol 3-mark question. Okay, so that ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विल कम इन अल्कीन चैप्टर, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन and also the chemical reactions of alcohol. Okay guys, in this video we will discuss how the dehydration of alcohol will takes place and in the by E1 reaction, E2 reaction, and in this video we will also discuss the stereoselectivity and radioselectivity of the products. Okay, see here, ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में पढ़ाऊंगा ये तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा विद क्वेश्चन के साथ. सो पार्ट 1, इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका मैकेनिज्म, ओके, एंड रेजोसेलेक्टिविटी, सीरोसेलेक्टिविटी. रेजोसेलेक्टिविटी मींस व्हाट, सेट्स द प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोडक्ट. इन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपका कार्बोकेटायन बनता है. So whenever the carbocation will form, rearrangement ring expansion will form. That we will study in part 2. That is rearrangement and ring expansion. Okay guys, without wasting the time, let's get started. So what is the dehydration? So dehydration means what? Dehydration. D means removal. Hydration means water molecule. It is very simple. The removal, आपको पानी निकालना है भाई alcohol में से. So it means what? Removal of water molecule from alcohol in the presence of dehydrating agent is called what? Dehydration. So here see the definition already given here. So that is what? Removal of water molecule from alcohol to form alkene in the presence of what? Dehydrating agent. And this is also called what? Beta elimination. Why we called beta elimination? That will also will discuss. सो यार यहाँ पे मैंने क्या बताया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताया ना कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. आप है ना H2SO4 यूज कर सकते हो, दैट इज H3PO फॉस्फरिक एसिड एंड फॉस्फरस पेंटॉक्साइड P2O5 एंड aluminum oxide. So these 4 you can use as a dehydrating agent to remove the water molecule from the alcohol. Okay, so mostly अपने NCERT में जो दिया हुआ है वो concentrated H2SO4 है. So देखो कोई भी अल्कोहल लो, so when you heat this alcohol with concentrated H2SO4, तो removal of water molecule will takes place. This OH and H is removed as a water molecule. Okay, remove as a water molecule. See here, this is you will get here H2O water molecule. Okay, now you are getting what here? Pi bond formation of this is what? Alkene. So 1 minute. So you are getting what here? Alkene you are getting the products. Okay guys, now मैंने क्यों यहाँ पे बताया ना बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं हम लोग. देखो, in the elimination reaction, see this is a OH at alpha carbon atom. This is what alpha carbon. What is alpha carbon atom? The carbon atom which is directly attached to functional group. This is what alpha. बीटा मतलब क्या होगा, तो अल्फा के बाजू में जो कार्बन होगा that is what? बीटा. So देखो यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन and from alpha से OH group. So that's why this is also called what? Beta elimination. Clear? Elimination. Okay, now let's see the reactions of the alcohol. See here, reaction with concentrated H2SO4. I am taking the different alcohol ले रहा हूँ क्योंकि alcohol 3 types है, primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol से. So देखो यहाँ पे reaction क्या होता है. So suppose if you take this is what? ये जो OH है, this OH is attached to primary carbon atom. What is the primary carbon atom? The carbon atom which is attached to only one another carbon atom. Secondary carbon atom means the carbon atom which is attached to, देखो यहाँ पे, which is attached to 2 other carbon atoms. Tertiary means what? That carbon atom which is attached to 3 other carbon atoms. Clear? देखो, this is called what? Primary 1 degree alcohol. This is called what? 1 degree alcohol. So 1 degree alcohol है वो less reactive है. क्यों? क्योंकि
प्राइमरी कार्बोकेटन हाईली अनस्टेबल, ये कार्बोकेटन क्या चीज है, हमें आगे पढ़ने वाला है मैकेनिज्म में, तो फिलहाल याद रखो, जस्ट कीप इन योर माइंड प्राइमरी अल्कोहल्स आर लेस reactive. For that we have to use concentrated H2SO4. So what happened, removal of water molecule, this is OH and this is H, so you will get what, alkene and water molecule is removed. That's why this is called elimination reaction. Now see here, this is what secondary alcohol. So this, see, this OH is present on the secondary carbon atom, so that's why this is called 2 degree alcohol. 2 degree alcohol का मीनिंग क्या होता है, secondary alcohol. Okay, so secondary alcohol little bit more reactive than primary alcohol, इसलिए हम concentration इसका क्या किया, हमने decrease कर दी है 80%. So again this is what OH and here this H will remove, then you will get the what, alkene. This is called what, propene. So what you are getting, this is what, propene. Now next here, this is a tertiary alcohol. Why? Because this OH is attached to 3 degree carbon atom. This is what, 3 degree carbon atom. What is a 3 degree carbon atom? The carbon atom which is attached to 3 another carbon atoms. So here also what, removal, यहाँ से AOH, तो यहाँ पे CH3 है ना, तो इसको हम CH2H लिख देते हैं. So all CH3 same है, तो आप कहीं से भी you can remove the hydrogen atom. So removal of what, water molecule will takes place, then you will get what, alkene. So what is IUPAC name of this compound, 1 2 3. So this is called what, 2-methyl propene. Okay guys, this is about normal reactions of the alcohol with H2SO4. Now we will discuss इसका mechanism क्या होगा, how this reaction will takes place. Okay, now let's see here mechanism. So this is very very important thing. See here, secondary alcohol and tertiary alcohol react by E1 mechanism. Tertiary, secondary react by E1 mechanism, but primary alcohol react by E2 mechanism. अभी E1 क्या चीज है, E2 क्या चीज है, आपने ऑलरेडी अल्कीन चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर भी आपको बता रहा हूं व्हाट इज E1. E1, 1 का मीनिंग होता है ओनली एक मॉलिक्यूल होता है, तो मतलब इसका जो RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्युलैरिटी. सो E1 मीन्स व्हाट, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय 2 स्टेप. एंड E2 मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, E2 means what, bimolecular elimination reaction, that is takes place by only 1 step, single step. So here what, this is what, 2-step mechanism. The first step है, that is a protonation and formation of carbocation. देखो क्या होता है, normally this is what, tertiary butyl alcohol. So this is what, dilute H2SO4. अभी हमें पता है कि whenever you use the H2SO4, H2SO4 क्या देता है normally, H plus ion देता है. This is, it gives what, H plus ion. So this lone pair will take the H plus ion. Okay, now आपको क्या बनेगा, protonated. This is what, protonated OH बना. This is unstable. So ऑक्सीजन क्या करेगा, this is now good living group. पहले OH है वो bad living group है, OH minus is bad living group. Now H2 is good living group. Now this oxygen will take the this 2 sigma electron. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लेके चला जाएगा यहाँ से. So आपका बन गया, ये कार्बन एटम क्या किया, अभी उसका खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, तो इट गेट्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड. समझ में है ना, ये सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन लेके चला गया वो. सो नाउ यू आर गेटिंग कार्बोकेटाइन. दिस इज कॉल्ड व्हाट, कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन. नाउ यहाँ पे देखो, ये जो पहला स्टेप पे यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल एरो दिया, दिस इज वेरी फास्ट, तुरंत हो जाता है प्रोटोनेशन. उसके बाद ये जो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट, वेरी स्लो प्रोसेस. एंड हमें पता है कि द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इज नोन एज व्हाट, RDS. RDS का मीनिंग क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप. सो आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये वाला प्रोसेस है. ये प्रोसेस में क्या बन रहा है आपका, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट. क्लियर, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट. इसका मतलब ये जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है. अगर ये कार्बोकेटाइन, ये जो बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस. अगर ये अनस्टेबल है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल होगा. तो ओनली स्टेबल होगा तो ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ सी स्टेप 2, दैट इज व्हाट, deprotonation. आफ्टर फॉर्मिंग द व्हाट, कार्बोकेटाइन, नाउ फ्रॉम द adjacent position, from the beta position, and here we have the all CH3 groups, they are all chemically equivalent. उनकी केमिकल नेचर सेम है. So you can remove the hydrogen from any carbon atom. Now you are getting what, here pi bond and deprotonation. This is what, H plus ion. So here what, the H2SO4 is act as a what, dehydrating agent, that is what, catalyst. So you are getting what, alkene, that is what, 2-methyl propene. This is the what, mechanism of the
डिहाइड्रेशन। आपको याद रखना है मैकेनिज्म में क्या करना है, पहले अल्कोहल फर्स्ट गेट प्रोटोनेटेड, सो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, देन आफ्टर क्या बनेगा, ये प्रोटोनेटेड फॉर्म बनेगा, तो देन उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद कार्बोकेटायन बनेगा। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रिएक्शन इजीली होगा, अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो रिएक्शन इजीली नहीं होगा। क्लियर ना? सो द एंटायर प्रोसेस हियर द रेट इज डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। ओके, then after formation of carbocation from adjacent position, deprotonation will takes place, removal of H plus ion, and you will get the what, alkene. Clear now? Very good. Now see here, what I said here, the reactivities depend on what, stability of the carbocation. Now we will discuss the reactivity order. Now see here, reactivity order, reactivity क्या बताया मैंने, see reactivity order depend on what, stability of carbocation. So more stable the carbocation, reaction will speed. Are you getting my point? Now see, I am taking here, this is what 3 degree alcohol, this is what secondary alcohol, this is primary alcohol, this is what methyl alcohol, this is what, sorry 1 minute, this is what methyl alcohol, methyl alcohol. ओके, नाउ हमें क्या किया, हमने प्रोटोनेशन करके क्या बनाया है, कार्बोकेटायन बनाया। सो फर्स्ट डू द प्रोटोनेशन एंड मेक द कार्बोकेटायन। सी दिस इज व्हाट OH इज रिमूव्ड, हियर कार्बोकेटायन you will get, here also you will get carbocation, this is what carbocation, this is also carbocation. See here, carbocation stability in the GOC you must have studied. The stability of carbocation is depend on inductive effect, resonance, aromaticity and hyperconjugation. Tertiary carbocation is more stable because what, here 3 CH3 groups there, this all 3 CH3 shows plus I effect, okay, and also plus H. Plus H means what, hyperconjugation. यहाँ पे कितना hyperconjugation है, 3 3 3, total 9 hyperconjugation, more stable. Here what, 3 3, only 6 alpha hydrogen and 2 CH3. Here only what, 3 alpha, here only what, 3 alpha hydrogen is there, so this is less stable. यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं है ना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, ये फॉर्म नहीं होगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायन यही है, इसका मतलब दिस इज व्हाट, मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल, देन मिथाइल अल्कोहल। नाउ वन मोर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सी द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सी आई एम कंसीडरिंग दिस इज व्हाट A, this is B, this is C and this is D. Okay, now what happened, see first we have to do protonation. Protonation करने के बाद what, removal of water molecule will takes place. Now here what, positive charge, so remove this OH, here also positive charge, here what, array, here what, actually OH is not there. Now see here, this is what, OH, so remove this OH and put the H plus ion, remove this OH, put the H plus ion, sorry, put the positive charge. Now see here, positive charge, all our carbocations we form. Now see the stability, this carbocation is stabilized by the resonance, okay, and this carbocation, see here, this is what, 3 membered cyclic, and it is what, all carbon atoms are sp2 hybridization and it follow 4n plus 2 pi electron. This is what, aromatic compound, aromatic, 4n plus 2 pi electron. अदरवाइज यू कैन इजीली देखो, कंपाउंड देखो यहाँ पे साइक्लिक है, ऑल आर sp2, yes sp2, if the compound having the odd number of pi electron pair, see here odd number of pi electron pair, this is aromatic. So here this is what, this is follow 4n pi electron rule, this is what, even number of pi electron pair, even number of pi electron pair anti-aromatic and odd number of pi electron pair aromatic, so this is what, anti-aromatic, highly unstable. So this is what, normally non-aromatic compound, this is secondary cation. Now see stability order is what, aromatic compounds are more stable, then non-aromatic, then anti-aromatic. Anti-aromatic normally exist नहीं होता है, इसलिए हम लोग anti-aromatic बोलते हैं. So what is the stable? Aromatic is more stable. So now aromatic means what, B is more stable, B is what, more reactive. So ये carbocation है more stable. Why? Because this carbocation involved in the aromaticity. Now who will come? A will come. Who will come here? First is what, B, the second is what, A. Then see why A, if you compare A and D, A carbocation stabilized by resonance, but B is, there is no resonance, and C highly unstable क्यों है, that is anti-aromatic, that is not exist. Then after who will come, D, then last is C. Clear? This is what, reactivity of alcohol.
in the dehydration. Now next see reactions of the primary alcohol. See here, I already discussed secondary alcohol and tertiary alcohol react by even mechanism. क्योंकि even mechanism takes place by two step. First step में कार्बोकेटाइन बन रहे हैं. So see here, primary alcohol मैंने क्या बताया था, least reactive. Why? Carbocation is highly unstable. So primary alcohols react by E2 mechanism. E2 mechanism मतलब यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है. So E2 mechanism takes place by single step. See here, what is the E2? E2 का meaning होता है bimolecular elimination reaction. क्योंकि यहाँ पे RDS जो है rate determining step. In that rate determining step, two molecules will react. Now this is what one step mechanism and no intermediate is formed. Only transition state is there. See here, this is what primary 1 degree alcohol. First step is what? Protonation will takes place. Protonated form. Now this see here, when this alcohol leave this carbon atom, at the same time this is what HSO4 after H2SO4 after giving H plus ion, this is what conjugate base. Every acid have the conjugate base. This is what conjugate base. So this conjugate base at the same time attack at the beta hydrogen atom. Why? Because this carbocation is unstable. If the water molecule leave this carbon atom, so carbon atom gets positive charge, that is highly unstable. Are you getting my point? So that here carbocation is not formed. So this is what very slow process, and this is called what? RDS. So in this RDS, see, two molecules are reacting. One is what? Acid, that is conjugate base, and alcohol. At the same time this pi bond will form. So conjugate base will take the beta hydrogen atom and water molecule will leave. So you will get what here? इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, पार्शियली ब्रेकिंग होता है, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन स्टेट. डायरेक्टली व्हाट? रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम one hydrogen atom. Now you will get what? Alkene, and here what? H2SO4 is regenerated. Clear now? Understood? And here water molecule. So in this case, see, there is no carbocation is formed. So it means what? This is what? E2 mechanism. Why? Because two molecules are involved in the RDS. Now clear, no? So primary alcohol react by E2 mechanism and secondary tertiary react by E1 mechanism. So this is what? Here the temperature is, here temperature भी मायने रखता है, that is what? Around 443 Kelvin. और एक बता रहा हूं मैं, अगर सपोज ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इफ यू रिएक्ट, अगर लो टेम्परेचर में, एक्चुअली ये जो रिएक्शन हुआ आपका E2 रिएक्शन एलिमिनेशन, अभी यहाँ पे है ना आपका SN2 रिएक्शन होता है, दैट इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो सपोज इफ यू हीट दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल with excess of alcohol, CH3, CH2, OH. In temperature is what? 413 Kelvin. So यहाँ पे low temperature. देखो high temperature जो है, high temperature always favors elimination reaction and low temperature favors the substitution reaction. ये SN2 reaction. अभी क्या होगा? ये जो alcohol है ना, यहाँ पे attack होगा directly. Now water molecule is removed. Now you will get like this CH3. Now CH2, this is what? Oxygen, and this is attached to CH2, then CH3. Clear? Then oxygen get the positive charge, and here what? Minus H2. Then उसके बाद क्या बनेगा? Then उसके बाद deprotonation. Oxygen will take this electron, so proton जो है यहाँ से H plus ion निकलेगा. तो मैं shortcut लिख रहा हूँ. This is what you are getting, C2H5, O C2H5. This is what? Diethyl ether. So ether also we are getting at low temperature. See, only ये जो reaction होता है only primary alcohol में. So primary alcohol after protonation there are the two possible mechanism. One is E2 reaction, one is SN1 reaction. E2 reaction कब होगा? At high temperature 443 Kelvin. It undergoes C2 mechanism. You will get the alkene. In the low temperature that is around 413 Kelvin and excess of alcohol. Here आपको ये जो important है, excess of alcohol. Then substitution reaction होके आपको ether बनेगा. This is what? Very very important point. Okay, so we will discuss the next topic, regioselectivity and stereoselectivity.
ओके। See next part, that is ratio selectivity and stereo selectivity. So what is ratio selectivity? Ratio selectivity का मतलब होता है the position of double bond formed in the alkene, and the position, it means the position of the hydrogen which is replaced, that is very important. And stereo selectivity means what? double bond बनता है, alkene shows geometrical isomer cis and trans, so cis बनेगा या trans बनेगा, that is what stereo selectivity. So मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. So first we will discuss protonation. So see here, protonation will takes place, H2SO4 gives the H plus ion, protonated form. तो आफ्टर क्या बनेगा, ये तो स्टोरी आपको पता है, that is what? Removal of water molecule, removal of water molecule. So you are getting what here? Carbocation. So after forming carbocation, what is the step? From the beta carbon atom, hydrogen will replace from beta carbon atom. ये जो beta, this is what आपका जो है, this is what alpha carbon atom, this is what beta, and here also beta one there. So two beta carbon atoms. So देखो, this is also beta hydrogen and here also beta hydrogen is there. Okay, now see here in this case, अगर ये जो लेफ्ट साइड है ना बीटा हाइड्रोजन, ये जो ब्लू वाला हाइड्रोजन, अगर ये रिप्लेस हुआ यहां से, तो आपका बनेगा ये प्रोडक्ट, दैट इज यहां पे डबल बॉन्ड, राइट साइड आपका डबल बॉन्ड, दिस इज व्हाट? ब्यूट वन इन. अगर फ्रॉम लेफ्ट साइड ये जो है ना लाल वाला, दिस रेड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, सो यू आर गेटिंग 2 ब्यूटीन. सो बनता क्या है? 2 ब्यूटीन बनेगा 1 मिनट, देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटी. सो आपको बनता है नॉर्मली, दैट इज व्हाट? 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2इन इज अ मेजर प्रोडक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सेडजप प्रोडक्ट. इसको हम क्या बोलेंगे? सेडजप, सेडजप, सेडजप्स प्रोडक्ट. सेडजप्स एक साइंटिस्ट है, इसने एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बताया, इन द डिहाइड्रोहालोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ऑलवेज द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, तो ये किसके साथ अटैचमेंट है? CH3 एंड CH3, दो सब्स्टिट्यूएंट है. सो ये जो डबल बॉन्ड है एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, दो एंटर पार्ट है ना एक ही सब्स्टिट्यूएंट है. सो दिस इज व्हाट? मोर सब्स्टिट्यूटेड इज अ मेजर प्रोडक्ट. अभी मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट क्यों है, उसका रीजन है. सो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल, दिस इज व्हाट? मोर स्टेबल. एंड व्हाई मोर स्टेबल? वी नो दैट ना, ये जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, that is directly proportional to what? Number of hyperconjugation, number of hyperconjugation. Okay, number of hyperconjugation. यहां पे कितना hyperconjugation है देखो. So alpha hydrogen find करो, what is alpha carbon atom? The sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond. यहां पे देखो alpha carbon atom, this is alpha carbon atom. यहां पे 3, यहां पे 3. Total how many alpha hydrogens are there in this compound 2 butene में? टोटल आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन है. कितना है बेटा यहाँ पे? Here we have the 6 alpha hydrogen, but in this compound see here, what is alpha carbon atom? Left side we have the, this is alpha carbon atom, only 2 alpha hydrogens are there. 2 alpha hydrogen means what? Only 2 hyperconjugation. Here 6 alpha means what? 6 alpha, 6 hyperconjugation. So stability of alkane is what? Directly proportional to number of hyperconjugation. More number of hyperconjugation means what? More stable the alkane. Less number of hyperconjugation, less stable. So we will get always more substituted alkene as a major product, because more substituted alkene is more stable. Understood? Very good. Now हम बात करते हैं यार, यहाँ पे we got the more substituted alkene, but what is the geometry of that? That is the geometry of the pi bond. See here, मैंने बताया कि more substituted alkene, that is called what? Ratio selectivity. The position of double bond is formed. यहाँ पे more substituted alkene बनेगा. Why? We know that is number of hyperconjugation more होंगे. Now see, after getting the pi bond, here see there is a 2 possibilities, because alkene shows the geometrical isomerism. ये जो 2 CH3 है, दो opposite direction में हो सकते हैं या same side में. So when these similar groups are opposite direction, यहाँ पे H होता है. When similar groups are in opposite direction, that compound is called trans isomer. Okay. And when similar groups are, देखो CH3 same side, this is called cis isomer.
तो ऑलवेज ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, आपका मेजर है ये वाला। भाई क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे दो CH3 के बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्शंस होंगे। अंडरस्टूड? ड्यू टू दिस रिपल्शन दिस इज अनस्टेबल and here there is no repulsion, this is what more stable. So this is the what, stereo selectivity. Stereo selectivity of alkene is what, always trans. Ratio selectivity is what, always more substituted, such that product is formed as a major product in the dehydration of alcohol. Some कुछ exceptions है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जहां पर conjugation होता है तो conjugation is dominating on hyperconjugation, that will also we will discuss. Okay, based on this concept we will see some problems here. Next, this is one compound. Here we have the tertiary alcohol. This is a tertiary alcohol. First what we have to do the protonation. Okay, protonation. Then protonation होने के बाद क्या होगा, removal of water molecule होगा. Then we are getting what, carbocation. एक स्टेप मैंने मिस किया क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। सो आपको OH रिप्लेस करना है, प्रोटोनेशन के बाद कार्बोकेटन बनना है। सो दिस कार्बोकेटन, दिस व्हाट टर्शियरी कार्बोकेटन, दिस व्हाट अल्फा, एंड यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो बीटा, द ब्लू ऑल्सो बीटा हाइड्रोजन, दिस रेड ऑल्सो बीटा हाइड्रोजन। सपोज अगर आप ब्लू को रिप्लेस करेंगे बीटा हाइड्रोजन, सो यू आर गेटिंग दिस वन, एंड इफ इट इज रिप्लेस रेड यू विल गेट दिस वन। सो दिस इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट ना। क्यों? व्हाई दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट? बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, दिस इज व्हाट अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, 2 4 4 plus 3, here what 7 hyperconjugations are there. Here what, only this is alpha carbon atom, only 4 alpha hydrogen. So this is what more stable. Clear? So see, now I am not explaining any rearrangement and ring expansion. Without rearrangement, without ring expansion, I am solving the problem. In the part 2 video I will explain rearrangement, ring expansion and with exceptional case. In this video only we will form the more stable alkene, that is ratio selectivity, stereo selectivity we will discuss. Now see in this case, यहाँ पे भी देखो पहला क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद वाटर मॉलिक्यूल, हियर व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस, एंड दिस इज व्हाट कार्बोकेटन, एंड हियर व्हाट rearrangement will takes place, but without rearrangement we are solving the problems here. So this is alpha, beta hydrogen also here there, this is what beta hydrogen, here also beta hydrogen. So अगर ब्लू वाला बीटा हाइड्रोजन यहां से निकला, then you will get what here, this is what more substituted. If this red hydrogen, this will eliminate, then you will get this alkene. So this is less substituted, this is more substituted. Again this is what, major product. They will ask this one, yeah, this one, this is what major product. Why? Here what, again see here 2 alpha hydrogen, 2 alpha hydrogen, 3, total 7. Here only, here 2, and here only 1 alpha hydrogen there. So here only 3 alpha hydrogen, and here total 7 alpha hydrogen. So this is what major products. अरे समझ में आ रहा है ना? So this reactions you have to write and you have to practice. Only organic chemistry का एक ही मेथड है, लो बुक लो एंड पेन लो, प्रैक्टिस करो। तो आपको न्यूज़पेपर जैसे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट, वोलेटाइल केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे। Now see here one more question, question number 3 here. See, so this is what, in presence of H plus, dilute H plus, first what happen here, protonation will takes place. Okay, protonation बन गया तो removal of water molecule, then you will get what here, कार्बोकेटन। यहाँ पे बन रहे कार्बोकेटन। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपका। So if you replace this what, red, I am not explaining any rearrangement, ring expansion, keep in your mind. सो ये रेड वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। अगर ये ग्रीन वाला रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। नाउ सी द स्टेबिलिटी, एक्चुअली दिस इज व्हाट मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट ये मेजर होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट मेजर। व्हाई? बिकॉज ये जो पाई बॉन्ड है ना, दिस इज रेजोनेंस विद दिस बेंजीन रिंग, दिस इज व्हाट कॉन्जुगेटेड, conjugated pi bond. So conjugated system is more stable than isolated. अभी यहाँ पे जो बना even it is more stable, even it is more substituted, but this is what isolated, isolated pi bond, isolated pi bond. So conjugated pi bonds are more stable. क्यों? That pi bond participate in the resonance with this benzene ring. So keep in your mind. So conjugation is always dominating on hyperconjugation. See here, जो conjugation है, conjugation
dominating on hyperconjugation. Clear? Hyperconjugation. Very good. Now abhi aade next here, this is the question number 4. So here also first we will do the protonation. Protonation hoga yahan pe, yes, protonation. Then removal of water molecule and place the carbocation. Yahan pe here also two possibilities there. Suppose if you replace this blue hydrogen, so you will get the pi bond here, and if you replace this green one, you will get the pi bond. But this is what more substituted according to sets of product. This is what more stable. But here what? This pi bond is less substituted, but these two pi bonds are resonance with each other. इसको हम बोलेंगे conjugated system. Conjugated pi bonds. And this is what? Isolated. Isolated pi bond. So which is more stable? So which is more stable? Conjugated system, then isolated. देखो alkene में पढ़ा होगा stability of the alkenes, that is conjugated, then isolated, then cumulated. Cumulated means continuous double bond. Understood? Okay, this is a what? Dehydration of alcohol and their position of double bond, retroselectivity and stereoselectivity. In this video I didn't explain any rearrangement ring expansion. यहाँ पे rearrangement का कोई दिमाग मत लगाओ. जैसे कार्बोकेटन बना, देखो यहाँ पे more stable, less stable and conjugated system हो रहा है. So in the next part, second video में हमें बात करेंगे there is rearrangement and ring expansion, और ये सारे doubts भी आपको clear हो जाएंगे. Understood guys? Okay guys, this is the dehydration of alcohol, and this is very very important for your JEE Mains and JEE Advanced and the NEET, even your CBSE board and HSC board. In the SSC board, they will ask the mechanism of the dehydration of alcohol for the 3 or 4 marks. Okay, so thank you all of you. So if you like my video, please subscribe SK Chemistry Academy. Please press the bell icon. You can get the notification for the upcoming videos. Thank you so much. In the next class, we will meet part 2 of the dehydration of alcohol.